Hello guys, good afternoon to everybody. Sorry, it's good morning. Yeah, it is a beautiful and great morning, and we are going to start our session that will help you to make your future mornings beautiful, great, and powerful. Yes, your mornings will be powerful because you are going to become an IAS officer, one of the most powerful posts that exist in India, or you can say on the planet Earth. Okay, I hope I am audible and visible to everybody. And let's start our session. Let's crack UPSC CSE with India's largest learning platform, that is Unacademy. This is about me, guys. On Unacademy, you will get daily live classes. These daily live classes are very crucial for your pre as well as for your mains preparation. On Unacademy, you will get structured courses, and these structured courses are very important for you. And these are available on Plus as well as Iconic प्लेटफॉर्म. देन अनअकैडमी पे आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है विच आई रेगुलरली कंडक्ट पर्टिकुलरली फॉर साइंस टेक एनवायरमेंट इको एंड करंट अफेयर्स as well as everything that is being happening on Unacademy. It is in recorded format, so you get unlimited access to everything. These are the India's top educators who will help you to crack UPSC CSE examination. When you take a single subscription of UPSC, आप इसमें बहुत बच्चों को डाउट होता है. देखिए बच्चों, आप जो सब्सक्रिप्शन ले रहे हो ना, इट इज अ सब्सक्रिप्शन ऑफ यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन. इट इज नॉट द सब्सक्रिप्शन ऑफ like science technology or environment and ecology. It is a subscription of UPSC CSE examination. So उसमें आपके all subjects of general studies mains कवर होते हैं, all subjects of general studies prelims कवर होते हैं, including your optional course. और आपको कितना पे करना है? This is what you are supposed to pay. Only 57,600 after you use this code SKUS, जो आपको 10% डिस्काउंट दिला देगा, एंड ये आपको पे करने ओनली फॉर 12 मंथ. इसे हम कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बिकॉज दिस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विल गिव यू पर्सनल मेंटोरशिप. And this personal mentorship is very important and very crucial for your UPSC CSE preparation. If you are going for 24-month iconic subscription and using code SKUS, again you will get 10% discount and you are paying only 89,100 rupees. Hello Kapil, Anupam and Yashashri. If you are going for plus subscription, instead of paying 44,000, you will be paying 39,600 because SKUS code will give you 10% discount. And in case of 24-month subscription, instead of paying, it is a plus, instead of paying 64,000 rupees, you will be paying 57,600 again, because this code SKUS code will give you 10% discount. Morning to Indra and Sonali. Fine. So we were discussing about the current affairs of 6th October. In that we discussed about NADA. Hello Anand. We discussed about WADA, World Anti-Doping Agency. Then we also discussed about International Olympic Committee. ओके उसके बाद हमने फायर क्रैकर में ईपीसीए के बारे में बात की थी, राइट. उसके बाद ईपीसीए के बाद हमने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान भी डिटेल में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर. And after that we discussed about NGT also. So basically yesterday we discussed about this organization which was established in which year, bata dijiye. This organization, again tell me, WADA is established in which year? This organization, again tell me, IOC is established in which organization? What was the answer of blockchain question in this year's prelims, sir? I'm Rahul Chetri. आई एम गोइंग थ्रू दीज क्वेश्चंस. 8 AM को मैं पूरा पेपर एनालाइज कर रहा हूँ. इफ पॉसिबल डू अटेंड दैट सेशन, इट विल हेल्प यू. ब्लॉकचेन वाले में मुझे अभी ऑप्शंस याद नहीं, आई नीड टू चेक आउट द ऑप्शंस, देन आई कैन हेल्प आउट. ओके राहुल, आईओसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बता दीजिए. आफ्टर दैट टेल मी अबाउट एनजीटी. सो एनजीटी का भी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको मुझे बतानी है लाइव चैट में. वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड and the next is this, guys. Okay, these trans fats are very important for your preliminary examination. UPSC can ask you question on trans fat anytime because they are in news, because they are in your daily life. हम रोज हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, पर्टिकुलरली नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज जो है, जिसे हम कहते हैं एनसीडी,
ओके। सो ये जो एनसीडीज है उनका मेन रीजन जो है ना वो है ट्रांस फैट। सो फ्रॉम दिस सेशन और फ्रॉम दिस न्यूज मैंने एक कीवर्ड पिक किया है, उस कीवर्ड का नाम है ट्रांस फैट। अब हम वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो रूरल पॉपुलेशन है, क्लोज टू 61% रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज नॉट अवेयर अबाउट ट्रांस फैट हैजार्ड्स। मतलब इंडिया के रूरल एरियाज में 61% लोगों को ये पता ही नहीं है कि ट्रांस फैट कैन कॉज हेल्थ इश्यूज, trans fat can cause increase in cholesterol level, trans fat can cause many non-communicable diseases. This is not, मतलब रूरल एरिया इज नॉट अवेयर अबाउट दिस, दिस इज द इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ हाउ एग्जैक्टली यू आर सपोज टू यूज पॉइंट्स इन योर मेंस आंसर राइटिंग। इफ यू आर राइटिंग an answer on health sector, if there is a question in mains about health sector, and while writing answer in health sector, if you mention 61% rural population is not aware about trans fat hazard and about the trans fat hazards related to the heart diseases, it will give you better marks। एक मार्क आपका इंक्रीज होगा। नॉर्मल पर्सन जब हेल्थ की बात करता है मेंस आंसर राइटिंग में, दैट पर्सन विल ओनली टॉक अबाउट दी हेल्थ इश्यूज विच आर कॉमन, वेरी कॉमन। व्हाट आर द इश्यूज विद द हेल्थ, जैसे एक्सेसिबिलिटी है, ह्यूमन रिसोर्स का इशू, ये सारा डिस्कस किया जाएगा, बट नो वन विल गिव दिस डाटा। सो 61% रूरल कंज्यूमर अनअवेयर ऑफ ट्रांस फैट हैजार्ड सेज सर्वे, ये आप आपके माइक्रो नोट्स में लिख कर रखिए। जीएस पेपर 3 में हेल्थ रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन आएंगे, इट इज मस्ट फॉर यू टू मेंशन दीज 2 लाइंस इन योर आंसर। गॉट इट? क्लियर? आई होप आपको मेरे एटीट्यूड में, टीचिंग में थोड़ा सा चेंज एक्सपीरियंस हो रहा होगा। अब तक जो हमने पढ़ा है उसमें हमने सिर्फ प्रीलिम डिस्कस किया था टिल 4th अक्टूबर, बट सिंस 4th अक्टूबर और 4th अक्टूबर ऑनवर्ड इन करंट अफेयर्स आई एम ऑल्सो गिविंग यू द बिट्स which can be used in your mains answer writing, guys, and it is very important. This is going to give you good marks in your general studies paper 3, as well as it will help you in writing essays related to health. Okay, Indrajit Yadav, whole news is not at all important for your mains. For your mains only these 2 lines are important. It is more than enough to mention these 2 lines in your mains answer writing. ओके, क्लियर? क्लियर, अंडरस्टूड। चलिए अब हम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली ट्रांस फैट डज। व्हाट एग्जैक्टली ट्रांस फैट डज, तो यहां देखिए, ट्रांस फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट एलिमेंट्स by raising the cholesterol level. So this red colored line, this is important only for your prelims and nothing else. It is important only for prelims. अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको याद कैसे रखना है। नंबर 1, you need to remember trans fat. What trans fat does? So trans fats, they increase the level of cholesterol. This is first bit or first information that you need to remember for your preliminary examination. If there is an increase in cholesterol, फिर क्या होता है? बढ़ने दो कोलेस्ट्रॉल, कितना बढ़ना है, क्यों डरना है? तो भाई साहब आपको डरना पड़ेगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट एलिमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल कैन कॉज हार्ट एलिमेंट्स। तो हियर हमने ये प्रूव कर दिया कि ट्रांस फैट कैन कॉज increase in cholesterol level, and that increased cholesterol level causes the heart ailments. Clear? Hello Gaurav, how's you and where are you from? This slide is clear. Which point is important for mains? Note it down. You should have a pen and notebook with you. Note down this point for your mains examination, and don't wrote down, but do remember this for your only preliminary examination. This is important only for prelims, not for mains. We are going to the next slide. Now we will go from the basics. What exactly trans fat is? Instead of discussing what is trans fat, we will discuss what exactly fat is. Then only you will be able to understand what is trans fat. So basically, if you go through the digestive system or through the nutrients,
There are three major nutrients in our body. First is carbohydrate. This carbohydrate is the main or major source of energy. Carbohydrate is a main or major source of energy, and another nutrient is protein, and this protein is the main building block or building block of our body. And third that you know about the nutrient, the name of that nutrient is fat, and this fat is required for synthesis of biochemical molecules in our body. For example, cholesterol fat से बनता है. For example, cell membrane is made up of fat, as well as this fat act as a emergency source of energy, जो हमने डिस्कस किया था कीटोसिस में. Emergency source of energy. Okay, good morning Neha Pandey. Okay, clear? So these are the three nutrients. So basically fat is one of the nutrient that we need in our diet, and it is required in large quantity. That's why we call it macronutrient. So what is fat? Fat is a macronutrient. Fat is a macronutrient. चलिए आगे चलते हैं. Now what these fats does? These fats, they are responsible for the production of fatty acids. They are responsible for the production of fatty acids, and you will find these fatty acids in living beings. Not important, leave it. Fatty acid जो है ना इंद्रजीत यादव, these fat cannot be used directly by our body for any synthesis of biochemical molecule. For the synthesis of biochemical molecule, you need to convert fat into fatty acid, and then these fatty acids are used in the biochemical synthesis. Clear? ये हो गया फैट के बारे में. उसके बाद अब आपको कुछ पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखने हैं. ओके, ट्राइग्लिसराइड is an example of fat or fatty acid, or triglycerides, which are active biomolecule. Triglyceride is an active biomolecule, and this triglyceride is produced from the fats. Second आपको याद रखना है, ये जो फैट है या फैटी एसिड्स है, you will find them mainly in the vegetable oil. आपको ये कहाँ मिलता है? फैट वेजिटेबल ऑयल में मिलता है. देन यू विल फाइंड दिस फैट इन घी. जो भी ऑयल है ना हमारे बॉडी में, इट इज बेसिकली फैट. फैट इज ऑयल, कार्बोहाइड्रेट इज एनर्जी, एंड प्रोटीन इज बिल्डिंग ब्लॉक. सो घी में आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा. वेजिटेबल ऑयल में आपको क्या मिलेगा? फैट मिलेगा. दैट्स यू, इफ यू रिमेंबर, दैट्स व्हाई इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव एनी हार्ट एलिमेंट और एनीबडी फ्रॉम योर फैमिली हैज हार्ट एलिमेंट्स, तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि डू नॉट ईट फ्राइड प्रोडक्ट्स. दे आस्क देम टू अवॉइड फ्राइड प्रोडक्ट. उसका रीजन ये है कि जब आप फ्राइड प्रोडक्ट ईट करते हो तो यू आर बेसिकली ईटिंग फैट, एंड वी ऑलरेडी नो ट्रांस फैट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल. और जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल इंक्रीज हो जाती है तो इट लीड्स टू हार्ट एलिमेंट. तो इस स्लाइड से भी आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है. You need to remember only one point for your prelims, that triglycerides, they are an example of fats. Triglycerides are the examples of fats. Okay, we are going to the next slide. Okay, this fat, another example of fat is lipid. You will come across the term lipids many times in biology or even in the newspaper. So these lipids are example of fat. Triglyceride is an example of fat. ठीक है, clear? That's it. अब यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है. We are going to the next point. देखिए, now what are trans fats? So everybody understood what is fat? So fat is a macronutrient, means it is one of the nutrient that is required to human. ये पहला point. Second point that you need to remember about fat is, fat, main source of fat is oil, whether it is vegetable oil or a ghee or animal oil. Third point that you need to remember, some examples of fat are triglycerides, and another example of fat is क्या देखा था अभी हमने? ट्राइग्लिसराइड के बाद हमने देखा था लिपिड. These are the examples of fats. Okay guys, just give me a minute. Till that time you can read what exactly trans fat is, then I will go ahead.
I hope the concept of fat is crystal clear to everybody. You read about how is the effect of bond in this. Indrajit, we will not go in that depth right now, ठीक है. I hope कि आपको एकदम proper idea आ गई. Hello Asif Ali, what exactly fat is. Now it will help you to understand what exactly a trans fat is. So basically, trans fat is a form of unsaturated fat. So fat can be saturated, fat can be saturated, or fat can be unsaturated. दोनों हो सकता है, फैट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है, ठीक है. तो ट्रांस फैट इज एन एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैट. दिस यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. सेकेंड पॉइंट, trans fat we find them naturally in some animal products or plants, as well as we can prepare them artificially. और जो हम currently food eat करते हैं ना, या currently जो हम oil eat करते हैं, particularly vegetable oil, that is normally, मतलब उसमें आपको artificial trans fat मिलेंगे. तो second point you need to remember for your prelims, natural as well as artificial. Natural as well as artificial. This is about the trans fat. Okay, where we get natural trans fat? तो natural trans fats are present in the meat, क्योंकि मीट जो हम ईट करते हैं ना, उसमें भी फैट है, एंड फैट इज अ सोर्स ऑफ ऑयल. आपने अगर कभी नॉनवेज प्रिपेयर किया है तो आप नॉनवेज में ऑयल थोड़ा कम ही यूज करते हो, क्योंकि वो खुद अपना ऑयल रिलीज करता है नॉनवेज, बिकॉज नॉनवेज में फैट होते हैं मसल्स के साथ. तो मीट इज अ सोर्स ऑफ नेचुरल ट्रांस फैट्स. हाँ, देन डेयरी प्रोडक्ट्स आर सोर्स ऑफ नेचुरल ट्रांस फैट. मींस मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल, इसमें आपको नेचुरल ट्रांस फैट मिलेंगे. देन कर्ड में आपको नेचुरल ट्रांस फैट मिलेंगे. पनीर में यू विल फाइंड नेचुरल ट्रांस फैट, एंड द घी इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल ट्रांस फैट. इसमें भी आपको नेचुरल ट्रांस फैट मिलेंगे. सो मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स, that's it. These are the sources of natural trans fats, and these trans fats are naturally formed when bacteria in these animals stomach digest grass. Can anybody tell me the name of bacteria that is present in the gut region or in the rumen of ruminants? जो ruminants होते हैं उनके gut या rumen में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसका नाम आप मुझे बताओगे. ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया. ओके, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर करेक्टली. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर इन द लाइव चैट. यस, आई नो देयर इज अ लैग ऑफ 17 सेकंड. 17 सेकंड बाद तो आप आंसर करोगे ना. आई विल वेट फॉर दैट. ये आंसर जो लोग करेंगे ना, इट मीन्स योर no E. coli, no Anju Devi, Priyanka Kumari, it is present, but that was not that's not I'm expecting. It can be vegetable also. Yes, vegetable भी हो सकता है. No, it is methanogen, guys. Yes, Anupam, microbiota में there are many bacteria. इसका example है methanogens. Okay, this is one example of the bacteria that we discussed already. तो इस स्लाइड से आपको दो तीन चीजें याद रखनी. नंबर वन, ट्रांस फैट इज अनसैचुरेटेड फैट, एंड नंबर टू, इट कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. ट्रांस फैट कैन बी नेचुरल और इट कैन बी आर्टिफिशियल. दैट्स इट अबाउट द ट्रांस फैट. ठीक है, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ सी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you compare dairy products with beef or lamb, मतलब नॉन वेज जो फूड आप ईट करते हो ना, वो उससे और डेयरी प्रोडक्ट को अगर आप कंपेयर करोगे तो ट्रांस फैट कम होता है डेयरी प्रोडक्ट में, और मीट में ट्रांस फैट इज मोर. दैट्स व्हाई इफ यू आर अ रेगुलर नॉन वेजिटेरियन, अगर आप रेगुलरली फूड ईट करते हो तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू माइट कैच अ डिसीज, पर्टिकुलरली आपको हार्ट एलिमेंट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. ठीक है, दिस इज नॉट मच इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द इंफॉर्मेशन. डेयरी प्रोडक्ट्स हैव लोअर concentration of trans fat and meat products have higher concentration of trans fat. We are going to the next slide. Then
If we are taking trans fat moderately, it is not harmful. Fine, completely fine. We are going to the next. Okay, now these artificial trans fats, they are also known as industrial trans fat. Remember, natural trans fat कहाँ पे मिलते हैं? Can anybody tell me where we can find natural trans fat? Then I will go ahead. Let's see how many of you remember or how many of you can answer कि where exactly we can find natural trans fats. Then I will go ahead. Okay, चलिए बताइए जल्दी से, हमें नेचुरल ट्रांस फैट कहाँ मिलता है? सर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एक्सप्लेन्स प्लीज, हाउ इज इट डिफरेंट? ओके इंद्रजीत यादव, सैचुरेटेड दे आर लेस रिएक्टिव एंड अनसैचुरेटेड दे आर मोर रिएक्टिव. This much is enough. Hello Vishwas Reddy, how's you and where are you from and for which examination you are preparing? Yes guys, dairy product, very good Ramandeep. So we find natural trans fat in dairy product as well as we find natural trans fat in the meat. Very good Anju Devi. गुड गुड. अब आते हैं हम आर्टिफिशियल ट्रांस फैट पे. तो दीज आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स दे आर आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट. क्या कहते हैं हम आर्टिफिशियल ट्रांस फैट को? वी आल्सो कॉल देम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट. ओके, क्या कहा हमने इन्हें? इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट. दूसरा पॉइंट, दे आर आल्सो नोन एज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट. तो द टर्म इज सेम. जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी का यूपीएससी 2020 प्रीलिम्स में इंस्टेड ऑफ आस्किंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज मोर कोर एरिया और टाइगर रिजर्व विद द लार्जेस्ट कोर एरिया, ये पूछने की जगह पे उन्होंने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैव लार्जेस्ट एरिया एंड एज अ क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. तो उन्होंने सिर्फ पूछा तो सेम थिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया? टर्म बदल दी. इंस्टेड ऑफ यू आस्किंग कोर एरिया, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को पता है, उन्होंने पूछा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट. उसी तरह दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन ट्रांस फैट और उन्हें आर्टिफिशियल ट्रांस फैट पे क्वेश्चन पूछना है, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म आर्टिफिशियल ट्रांस फैट और इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट दे विल यूज द टर्म हाइड्रोजनेटेड फैट. हाइड्रोजनेटेड फैट का मतलब होता है ट्रांस फैट. हाइड्रोजनेटेड फैट का मतलब दूसरा क्या होता है? ट्रांस फैट ही होता है. ठीक है, and they are hazardous. So basically, if you are consuming natural trans fat, if you are consuming natural trans fat at low level, कम अगर आप natural trans fat consume कर रहे हो, so that is completely fine. It is not hazardous. But even small quantity of artificial trans fat, small quantity of artificial trans fat or small quantity of industrial trans fat or small quantity of partially hydrogenated trans fat is hazardous. It is hazardous. Clear? तो इस स्लाइड से पहला हमने पॉइंट ये समझा कि ट्रांस फैट, there are two types of trans fat, artificial and natural. Natural trans fats are present in the dairy and meat, while artificial trans fats, they are also known as industrial trans fat. They are also known as partially hydrogenated fats. They are harmful or hazardous. Okay, now remember very very important, why vegetable oil remains solid at room temperature. Why vegetable oil, जिसे आप वनस्पति घी कहते हो, आपके घर में भी यूज किया जा रहा होगा, वनस्पति घी कहा जाता है, उसी को हम यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल. आपने अगर देखा होगा, इफ यू टेक ऑयल फ्रॉम दी सोयाबीन और इफ यू टेक ऑयल फ्रॉम दी ग्राउंडनट, तो वो सारे ऑयल लिक्विड रहते हैं. बट वेजिटेबल जो ऑयल होता है ना, वनस्पति घी, ये नॉर्मली क्या होता है, जिसे आप डालडा भी कहा जाता है. ओके, तो that is solid at room temperature. It is because this vegetable oil contains very high concentration of artificial trans fat. तो vegetable oil में क्या है? artificial trans fat है. That's why it remains solid at room temperature. That's why it remains solid at room temperature. Got it guys? So this is about the trans fat. We are going to the next slide.
Artificial trans fat may increase your risk of heart disease, yes, compared to the natural trans fat. Obviously artificial trans fat will increase the risk of heart डिसीज। ओके फाइन। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और इन सिंपल टर्म कोलेस्ट्रॉल। ये अब हमें डिस्कस करना है। ओके अब मुझे ये बात बताइए, एवरीबडी अंडरस्टूड व्हाट इज फैट एंड व्हाट इज ट्रांस फैट? हर एक बंदे की कंसेप्ट क्लियर हो गई है फैट और ट्रांस फैट की। नाउ आई विल गो टू द कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल हम आज नहीं पढ़ेंगे, वी विल डिस्कस कोलेस्ट्रॉल टुमारो, क्योंकि दो रीजन है। एक तो हमने कल अनाउंस किया था कि सैटरडे को कोई सेशन नहीं होगा, और दूसरा रीजन है कि बहुत सारे बच्चे आज 10 AM को 10 अक्टूबर 10 AM को ऑल इंडिया बाय वीकली या बाय मंथली मॉक टेस्ट है, वो भी दे रहे हैं, तो उनके पॉइंट मिस ना हो इसलिए हम यहीं पे रुकने वाले हैं। प्लीज टेल मी एवरीबडी गॉट द फेयर आइडिया अबाउट द फैट एंड ट्रांस फैट? इफ योर आंसर इज यस, प्लीज टेल मी, आई विल एंड द सेशन। ओके ग्रेट, सो डोंट वरी, वी विल डिस्कस अबाउट द फैट ऑल्सो। और हाँ, यहाँ आप देख सकते हो हम कल क्या डिस्कस करने वाले, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले। ये तो हो गया आपका 61% रूरल कंज्यूमर कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट हम डिस्कस कर लेंगे। देन ये ASW मिसाइल के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ब्लैक होल, क्योंकि फिजिक्स का नोबेल प्राइज ब्लैक होल रिसर्चर्स को मिला है, उसमें हम चंद्रशेखर लिमिट डिस्कस करेंगे। उसमें हम इलेक्ट्रॉन डी जनरसी क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, हीलियम फ्लैश डिस्कस करेंगे, ब्लैक होल क्या होता है ये डिस्कस करेंगे, व्हाट इज इवेंट होराइजन ये भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल डिस्कस अबाउट दी आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। देन वी विल डिस्कस अबाउट टग ऑफ ग्रेविटी, बहुत झगड़ा हो रहा है ग्रेविटी एग्जैक्टली क्या है इस पे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बड़ा मजा आया इसे प्रिपेयर करने में, ठीक है। सो दिस वी विल डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशनल लेंसिंग, देन वी विल डिस्कस अबाउट क्वासार्स जो आपको ऑलरेडी पता है। देन हम ये डिस्कस करेंगे मर्क्यूरी की ऑर्बिट क्यों चेंज हो रही है। उसके बाद हम फ्रेम ड्रैगिंग ऑफ स्पेस टाइम अराउंड रोटेटिंग बॉडीज ये भी डिस्कस करेंगे, ग्रेविटेशनल रेड शिफ्ट डिस्कस करेंगे, ओके, ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कस करेंगे। मतलब कल का जो सेशन है ना, इट इज फुल एंड पैक्ड सेशन, डोंट मिस टुमारो सेशन। आपका ब्लैक होल और स्पेस का जो ये पार्ट है ना एस्ट्रोनॉमी वाला, ब्लैक होल का इतना परफेक्ट एंड क्लियर होगा कि आप उसे लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। नहीं, कल होगा रमनदीप, हमारी जो एग्जाम थी ना स्टेट सर्विसेज की MPSC की, वो कैंसिल हो गई है बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन इशू, मराठा रिजर्वेशन इशू। तो अब हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स है ना, पहले मैं लेक्चर्स बता दूं। टुमारो वी हैव अ सेशन एट 8 AM ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, जिसमें हम पेपर को एनालाइज करेंगे, एंड सेकेंड सेशन विल बी एट 11:15 AM एंड दिस सेशन विल बी ऑन यूट्यूब, एंड मोस्ट प्रॉबेबली दिस 11:15 सेशन ऑफ टुमारो विल बी मोर देन 1 hour, क्योंकि हम कल ये पूरा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वी विल ट्राई टू फिनिश इट। सो कल ये 2 सेशन हो गए। दोज स्टूडेंट हु आर न्यू, दिस इज माय टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल, follow me on Unacademy, use SKUS code for taking subscription on Unacademy, and don't forget to dedicate your hats to me on Unacademy, and it at any cost you need to remember this SKUS code for plus as well as iconic subscription। दोनों सब्सक्रिप्शन को में अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए तो इट इज़ मस्ट टू यूज़ दिस SKUS कोड। अच्छा, इट इज़ नॉट मस्ट कि सिर्फ UPSC के लिए SKUS कोड यूज़ करना है, यू कैन यूज़ इट फॉर नीट, यू कैन यूज़ इट फॉर IIT JEE, MPSC, MPPSC, UPPSC, स्टेट सर्विसेज, NDA, CDS, UGC नेट, कोई भी एग्जाम के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हो। कौन सा? SKUS। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। Sinu Sahu, please watch recorded videos, you will get fair idea. So that's it for the day guys, thank you very much. We are meeting again tomorrow at 8 AM on Unacademy Learning app. Until that time, bye bye, take care.